स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर। आइए इस वीडियो में जी मेन 2023 का जो क्वेश्चन पेपर आज संपन्न हुआ है उसमें से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन ब्रॉडली मेमोरी बेस्ड और इंटरनेट के सोर्सेज से ली गई हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स ने मेमोरी के बेसिस पे जो शेयर किया है उसके बेसिस पे मैंने कंपाइल किया है। We will try to do as much question as possible in this video। देखते हैं कितना क्वेश्चन आता है अपने पास। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप सब दोस्तों को ये रिक्वेस्ट करता चलूं कि जो लोग भी मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन को हिट करने में बिल्कुल संकोच न करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना मुमकिन हो सके। ये क्वेश्चन हमारे पास है और देखने से ये काफी भारी भरकम है, लेकिन अगर आपको ट्रिक और फार्मूला पता है तो ये बिल्कुल भी आसान है। डेफिनेट इंटीग्रल का एक फार्मूला जो बहुत कॉमनली यूज करते हैं और इस पे क्वेश्चन आता है वो ये है कि अगर कोई फंक्शन है जिसका बाउंड a से b तक ऐसे इंटीग्रेट करना fx dx, तो ये जो है बिल्कुल इसके बराबर होता है। अब ये जो इंटीग्रेशन दिया गया है उसमें जो a का वैल्यू 0 है और b का वैल्यू π/2 है, तो जब a और b दोनों जोड़ेंगे तो हमारे पास π/2 ही आएगा। ओके, तो मैं इतने वाले पोर्शन को i अज्यूम कर लेता हूं। लेट i बी 0 to π/2 sin 223 x डिवाइडेड बाय sin 223x प्लस cos 223x dx। अब ये फार्मूला का जब हम यूज करेंगे तो ये 0 to π हो जाएगा और जहां जहां पे x है वहां पे a प्लस b को हम ऐड करके लिखेंगे। तो sin 2023 को हम sin x टू द पावर 2023 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे sin π/2 माइनस x पावर टू 2023 एंड सिमिलरली यहाँ पे ये जो है जो होगा वो होगा sin π/2 माइनस x टू द पावर 2023 प्लस dx। अब देखते ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये जो हो जाएगा वो cos हो जाएगा, तो cos 2023x हो जाएगा, नीचे ये cos हो जाएगा और ये sin हो जाएगा 2 प्लस sin 2023x dx। अभी ये दोनों हमारे पास आई हैं, i ये भी है और i ये भी है, तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 2i π/2 sin 23x divided by plus cos 23x divided by sin x plus x आ जाएगा और ये ब्रैकेट में हमारे पास dx आ जाएगा। राइट फ्रेंड, नाउ व्हेन द डिनोमिनेटर इज कॉमन the numerator will add up and this will become sin 2023x plus cos 2023x divided by sin 2023x plus cos 2023x dx। Numerator and denominator is the same value, this will strike each other down and हमारे पास यहाँ पे मिलेगा सिर्फ 0 to π/2 dx और x will become π/2 minus 0 is equal to π/2। तो हमारे पास क्या आता है, i is equal to π/4 आता है। ओके, 2i is equal to π/2 is i is equal to π/4। Now 8/pi multiplied by π/4 will be 2। Our answer for this question actually will be option 2। We move to the next question now, and this question is under integration under modulus, and the very simple formula or very simple belief around modulus is that we won't have to accept anything negative. So anything negative will also become positive. Looking at x square minus 3x plus 2, we find that this particular equation will 2x minus x plus 2, x is equal to x minus 2 minus x minus 2, and this will be 1 and 2. At x is equal to 1 and at x is equal to 2, it will cross x axis, means it will come down below the x axis.
which means between these two numbers, the value of this will actually be negative. So what we need to do is we need to split this integration into three parts and write 0 to 1 x square minus 3x plus 2 dx. This is perfect. Then 1 to 2, we have to take negative of that, because it will, when it becomes negative, we have, in order to make it positive, we will need to multiply it by minus 1. Then we will have to write it like this. And then 2 to 3 again we have. Okay. And this will become minus of 1 2 plus 2 oblique 3 x cube 3 minus 3x squared 2 plus 2x. Now if we draw the graph, we will find something like this. Area, this integration suggests nothing but the area between 0 to 3 with modulus, which means suppose this area is A, this is B, and then at x is equal to 1 is here, x is equal to 2 is here. Somewhere at x is equal to 3 here, this area will also be considered. Any integration like this suggests this minus this plus this plus this. But since this is below x-axis, it will be taken as minus. So if I take this as A, this as B, and this as C, our area will be A minus B plus C. But this modulus says, no, we have to write A plus B plus C. We have to find A plus B plus C only, which means this area we have to consider on the upward for this modulus. So therefore we have written this as this. Now when you calculate, you will find the value of this is coming as 11/6. The 11/6 is the correct answer. I did not do anything. It is pretty simple for you to do it. I hope that you will be able to do it in fact. तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे फ्रेंड्स. तो मैं लाइक बटन को प्रेस करते जाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाइए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन भी प्रेस करते जाइए. अब इस क्वेश्चन पे आते हैं. ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. मैं तो ये बोलूंगा कि ये बिल्कुल जी के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी पूछा है तो इसको सॉल्व करना ही है. थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा. यहाँ पे 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, नीचे से स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हम कॉमन ले लेंगे तो स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस सीकेंट ऑफ इनवर्स. यहाँ पे ऊपर जो है न्यूमरेटर में 4 कॉमन ले लेंगे और नीचे जो है 3 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा. ठीक है, और ये यहाँ इससे स्ट्राइक हो जाएगा और ये इससे स्ट्राइक हो जाएगा. ठीक है, तो ये tan इनवर्स ऑफ 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा और सीकेंट स्क्वायर ऑफ 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा. ठीक है ना. तो यूजुअली स्टूडेंट्स आर वेरी फैमिलियर टिल साइन कॉस एंड tan, बट सीकेंट में थोड़ी सी घबराहट होगी, वैल्यू याद नहीं होगा. बिल्कुल घबराने की बात नहीं है. ये जो है पाई ऑब्लिक 6 हो जाएगा. ठीक है ना. और सीकेंड इनवर्स 2/3 को अगर हम थीटा मान लें तो ये हमारे पास थीटा सेक थीटा इज इक्वल टू 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होगा. ये भी जो है थीटा इज इक्वल टू पाई/6 होगा. तो पाई/6 इज इक्वल टू पाई/6 इज पाई इज इक्वल टू 3. पाई/3 विल बी द आंसर. तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. Friends, we have come to the next question. Before I start, these options are actually incorrect. This is of some other question. However, we will solve this. It's not very difficult. There are two equations which is given and no bound is given, and it is saying that we have to find the area under the curve, which means actually we have to find the area enclosed between the intersection of these two curves. This is a parabola and this is a straight line, which means it will intersect at two points. If we draw that, we will find something like this. Okay, intersection will be here and here. Let us find that from we can simply replace 4x here with y. Okay, so 2x is equal to y plus 2, so 4x will become y square here plus 4x 2y plus 4 minus 4 is equal to 0. This will give us y is equal to 0 and minus 2.
So in order to find the area, since y square is involved here, we may actually use formula of C to D x dy. And here x will be what? I'll take x1 from here, and this will be 4 minus y square divided by 4, and x2 from here will be y plus 2 is equal to 2. Therefore, the area will be minus 2 to 0, 4 minus y square divided by 4 minus of y plus 2 divided by 2 dy, okay? And this will be minus to 0, this will be 1 y square oblique 4 minus of 1 plus y oblique 2 dy. Minus 2 to 0, 1 minus y square oblique 4 minus 1 minus, I take minus outside and write it y divided by 2 y square oblique 4 dy. The answer for this will be actually 1 oblique 3. So our answer for this will be 1 oblique 3 square unit.